हाय फ्रेंड्स, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जो कि इंजन के ऊपर है। इसको ब्लैक कैसे करें वो आपको मैं बताऊंगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, स्प्रे लेते हैं और मार देते हैं, फस 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 हो गया ब्लैक। वो 2 दिन में फिर से निकल जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ सही तरीका, सही तरीका क्या है इंजन मारने का। और मैं आपको सिर्फ ये इंजन कवर का पार्ट 3 मार के बताऊंगा किस तरीके से मारते हैं और कलर नहीं निकलेगा। तो हमारे पास स्प्रे पेंट है और ये हमारे पास जो है कंप्यूटर में मैच होके आता है ब्लैक कलर। इन दोनों का डिफरेंस भी दिखाऊंगा आपको मैं साथ में, और आपको बताऊंगा कैसे कलर मारे, कैसे स्प्रे करें ताकि लाइफ टाइम तक चले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सही तरीका इसका मारने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि कलर डबल से ना निकले। और इन दोनों का मैं जो है डिफरेंस भी दिखाऊंगा और लाइफ भी बताऊंगा कि कितनी लाइफ, कौन सा कलर कितनी लाइफ चलेगा, ये स्प्रे पेंट का भी और ये हमारा जो कंप्यूटर से मैच होके आता है इसका भी, और इन दोनों की शाइनिंग भी बताऊंगा आपको मैं। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, वीडियो थोड़ी भी स्किप ना करें क्योंकि जो इसके स्टेप है, कैसे यहाँ पे नीचे ऑयल वगैरह रहता है इसके, वो कैसे निकाले, कौन से पानी से निकाले और कौन सा केमिकल लगाए ये पेंट रिमूव करने के लिए। आप क्या करते हो, लेते हो स्प्रे, खोलते हो ढक्कन और फस 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 इसको ब्लैक कर देते हो। ऐसा ना करे बिल्कुल भी। मैं आपको बताता हूँ कैसे पेंट किया जाता है स्प्रे। Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas, oh you meant the world to me.
दोनों पेंटिंग होके रेडी है। ये हमारा स्प्रे पेंट और ये हमारा गन पेंटिंग। दोनों में देखो कितना फ़र्क है। ये थोड़ा लाइटली डल दिख रहा है और वो देखो उसमें कितनी शाइनिंग आई है जो हमने गन से मारा है। स्प्रे थोड़ा लाइटली रहता है और जो हमारा कलर है वो डार्क है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा है। ये 4-5 साल चलता है और जो ये स्प्रे पेंट है ये 4-5 महीने में निकल जाता है। फिर से करना पड़ता है आपको। तो इसलिए आप अगर स्प्रे पेंटिंग भी करते हो सस्ते में घर पे लाके तो ठीक है, आप कर सकते हो, मगर उसको अच्छे से साफ़ करें उसके बाद ही स्प्रे पेंट करें। और आप घर पे स्प्रे पेंटिंग कर रहे हो तो कर सकते हो, मगर अच्छे से साफ़ करें। और हमारा आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें,